morning, students. Today we are going to discuss the next topic that comes under emerging modes of business, students. Earlier we have discussed the role of e-business and the role of e-commerce, right, students, and what are the things required for doing the e-business. As I told you earlier, students, business literally means busy in earning income. To sell and purchase of goods and services through electronic form, that is known as e-business. E-business includes e-commerce, students. Right, students? So today we are going to discuss the next topic that comes under emerging modes of business. What are the resources required for successful implementation of e-business? Right, students, when a firm wants to start e-business, what are the resources, what are the things required for doing electronic business? Right, students? The very first is, students, computer hardware. Of course, for doing e-business by a firm or by a company, the very first thing required is computer hardware. You need a computer hardware, students, for doing e-business, electronic form of business. So let's discuss, students, one by one the resources required for successful implementation of e-business, students. The very first is, students, computer hardware. The business enterprise must get a computer with proper speed and technology before starting e-commerce trading. Of course, students, you require a computer hardware and speedy technology for doing e-commerce or for doing e-business, students. The computer must have the capacity to handle a big volume of business. Right, students, you are doing a business now, right, on a large scale. So you require a high volume of business and high volume of computer hardware. Right, students. So the very first thing required under the resources required for successful implementation of e-business is, students, computer hardware. Right. So let's discuss, students, again. The business enterprise must get a computer with proper speed and technology before starting e-commerce trading. Right, students. The computer must have the capacity to handle a big volume of business, students. Right, because there are so much captions जो कि computers में आएंगे in a website. Right, students, you have to handle the staff required to handle that captions. Right, students. So you require, the very first is e-commerce trading computer hardware. Second, technically qualified staff, students. So this is supposed to be the second point, students, that you require technically qualified staff. Those who know the computer system, those who are having that good knowledge of a computer hardware for receiving payments and placing the orders also, students. So the second one is technically qualified staff. To carry out trading, the business must have well qualified and capable workforce who are able to handle internet easily. They must be trained to handle sales order, processing order, and handling enquiries also. Right, students? So you require a technically qualified staff under the successful requirement of e-business while starting a electronic business, students. Technically qualified staff must deal with the customers, right, in the form of sales order, processing order, or handling inquiries of the customers. Right? So let's discuss, students, technically qualified staff. To carry out trading, the business must have qualified and capable workforce who have able to handle internet easily. Right, students? They must have a good knowledge of internet. They must have a good knowledge of each and every phase of the internet that comes under the e-business, electronic business. They must be trained to handle sales order, processing order, handling inquiries, etc. Right, students? I hope it is very much clear to you. And the third one is, students, computer system for receiving payments. The payments can be done through ATM or the debit card or electronic fund transfer, students, right, in electronic form. So the third step, the third functions that comes under resources required for successful implementation of e-business is computerized system of receiving payments. The businessmen have to make arrangements with commercial banks and credit card agencies. Right, students, of course, the payment has to be done through to the bank, through ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी जो पेमेंट होता है, तो क्रेडिट कार्ड एजेंसी से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा एक बिजनेसमैन को, और एक बिजनेसमैन का अपना एक बैंक अकाउंट होगा जहां पर पेमेंट आती रहेगी. So computerized system of receiving payment, students. The businessmen have to make arrangements with commercial bank and credit card agencies. The enterprise needs to develop an efficient system of receiving payment of goods and sold or services hired. Right, students?
I hope the computerized system of receiving payment is very much clear to you. So let's come to the next point. Well-designed website. This is supposed to be the most important thing that requires under electronic business students. राइट अगर आप फिजिकली कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई शोरूम लेना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अगर आप फिजिकली कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई शोरूम लेना चाहते हैं, तो योर शॉप योर शोरूम मस्ट बी अंडर द सेंट्रल लोकेशन होनी चाहिए, उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद यू नीड फर्नीचर, यू नीड एसेट, यू नीड शो विंडोज, you need air conditioner, and what are the best services provided to the customers also, students, right students? So but under e-business, the website is the whole soul. You are having a well designed website. आपकी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैरीड अंडर द वेबसाइट, राइट, जिससे कि कस्टमर्स एक बार ही जैसे वेबसाइट पे आप ही क्लिक करेगा तो सारे इंफॉर्मेशन एक साथ आनी चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए थ्रू ग्राफिक्स, स्टूडेंट्स. सो the most important things that comes under e-business is well-designed website. The website should be designed beautifully by using hyperlinks, graphs, and other attractive pictures, students. The website must provide complete information to the customers regarding the price of products, contents, and use of the products. Of course, students, price of the products एक पूरा catalog होना चाहिए. What are the items you are giving to the customer? What are the items you are selling? रिगार्डिंग गुड्स और गिविंग सर्विसेज स्टूडेंट्स. तो उसके लिए पूरा कैटलॉग होना चाहिए, पूरी प्राइस लिस्ट होनी चाहिए. यू हैव अट्रैक्टिव फीचर्स इन योर वेबसाइट स्टूडेंट्स, जिससे कि कस्टमर एकदम से ही अट्रैक्ट हो, राइट. सो लेट्स डिस्कस द फोर्थ पॉइंट अगेन स्टूडेंट्स. वेल डिजाइन्ड वेबसाइट. द वेबसाइट शुड बी डिजाइन्ड ब्यूटीफुली बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स, ग्राफ्स एंड अदर अट्रैक्टिव पिक्चर्स. The website must provide complete information to the customers regarding the price of the products, contents, and use of the product. I hope this is very much clear to you, students. Now come to the next one. The next one is, students, telecommunication, right? Telecommunication facilities, right students? Your speed of the net is must be proper, right students, जिससे कि कोई भी स्पीड बीच में टूटे ना. बिफोर डीलिंग विद द कस्टमर्स कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो बीच में से कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, राइट, बिटवीन द स्पीड एंड व्हाइल रिसीविंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स. यू हैव अ वेल डिजाइन्ड वेबसाइट, यू हैव अ वेल डिजाइन्ड कंप्यूटर सिस्टम, यू हैव अ वेल एडवांस टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स द स्पीड इज वेरी मच अपिंग स्पीड और डाउनिंग स्पीड भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए स्टूडेंट्स, राइट. सो दैट इज नोन एज, दैट कम्स अंडर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. E-commerce will succeed only if adequate telephone lines and internet facilities are available and there is no interruption in these services. Right, students? The prompt internet facility should be made available to the common man at a reasonable price. By making the use of internet popular in middle class and low income group, the digital divide can be bridged. Right, students? Your main aim is to not only to catch the topmost class society. Your main aim is to reach each and every class of the society. अगर आपको अपना ई बिजनेस के थ्रू अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सेल इंक्रीज करनी है, लो इनकम ग्रुप के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और मीडियम इनकम क्लास ग्रुप के पास भी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इफ यू वांट टू रीच टू अ लो इनकम ग्रुप और अ मीडियम क्लास इनकम ग्रुप, सो दिस फैक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सो telecommunication facilities. E-commerce will succeed only if adequate telephone lines and internet facilities are available and there is no interruption in these services. The prompt internet facility should be made available to the common man at a reasonable price. Right, students? Under a common man. Common man includes every type of customers. Right, students? Including A class customers, B class customer group, or lower income group customers also. By making the use of internet popular in middle class and low income group, the digital divide can be bridged. I hope these are the points that is very much clear to you, students. What are the resources required for successful implementation of e-business? Right? Of course, the very first is, students, is computer hardware. Second is, students, technically qualified staff. Third is computerized system of receiving payments, students. Fourth, well-designed website. Fifth, telecommunication facilities. Now this is very much clear to you, students. Now come to the next concept. The next concept under emerging modes of business, students, is outsourcing concept. Outsourcing.
और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम बीपीओ भी बोलते हैं. आउटसोर्सिंग, व्हाट यू मीन बाय द टर्म आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट? स्टूडेंट्स, आउटसोर्सिंग मीन्स carrying out business activity through other companies. Right, students, carrying out business activity through other companies, that is known as outsourcing under one line. Right, students, getting your business, some of the business transaction done through other companies, that is known as outsourcing concept of BPO. Right, students, let's take an example. uh, let's take an example of a school students. स्कूल का मेन काम है स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना. This is supposed to be the core activity that each and every school must provide. लेकिन स्कूल के अपनी एजुकेशन के साथ साथ there are certain other things students जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है, namely canteen facility, a good and healthy and hygiene canteen facility to the students, right? उसके बाद जो पार्किंग होती है, right students, proper well designed well developed parking system भी होना चाहिए स्टूडेंट्स के व्हीकल्स के लिए. So these are the two things, राइट स्टूडेंट्स, जो कि स्कूल किसी दूसरे एजेंसी से, किसी दूसरे से ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लेता है. एक कैंटीन फैसिलिटी हो गई स्टूडेंट्स, दूसरी मैंने आपको वो वाली फैसिलिटी बताई, पार्किंग फैसिलिटी बताई जो स्कूल कैंपस के अंदर होता है. तीसरी स्टूडेंट्स जैसे कि कोई बुक शॉप है, राइट स्टूडेंट्स, कोई ड्रेस है, राइट, और दीज आर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो किसी शोरूम या शॉप से हायर किया जाता है कि इस स्कूल की ड्रेस आप यहाँ से ले सकते हैं, इस स्कूल के लिए स्टेशनरी आप इस शॉप से ले सकते हैं. तो वो जो शॉप है, वो जो स्टेशनरी है, वो जो कैंटीन है, वो जो पार्किंग के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हायर किया गया है लोगों को, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट. I hope this is very much clear to you now, students. For example, you are having a company. आपको अपनी कंपनी का एड देना है न्यूज़पेपर के अंदर, या आपको अपनी कंपनी का एड देना है टेलीविजन के अंदर. सो यू कॉन्टेक्ट टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी और यू कॉन्टेक्ट टू न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजिंग सेक्शन में आप जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स. तो आप अपनी कंपनी का एड किसी दूसरे से करवा रहे हैं ना, वो जो दूसरा कंसर्न है, दूसरी फर्म है, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट. सो इन अ वन लाइन स्टूडेंट्स, आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट मीन्स BPO. BPO refers to getting a business task accomplished through an outside agencies. Right, students? I hope it is very much clear to you. So let's discuss BPO. Business process outsourcing refers to getting a business task achieved through an outside agency. Right, students? It can be defined as contracting out non-core and routine activities. Non-core activities मतलब those activities जो कि वो business नहीं करता. राइट स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्कूल का मेन कोर एक्टिविटी है एजुकेशन. नॉन कोर एक्टिविटी है कैंटीन फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटीज, स्टेशनरी फैसिलिटी वो दे रहा है, लेकिन उसका मेन गोल एजुकेशन है. राइट स्टूडेंट्स, हालांकि वो एजुकेशन के साथ साथ स्कूल के साथ साथ वो जुड़ी भी है, लेकिन दैट इज सपोज टू बी द नॉन कोर एक्टिविटीज. सिमिलरली एक कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाह रही है टेलीविजन में, राइट स्टूडेंट, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देना, एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, कंपनी का ही प्रमोशन हो रहा है, प्रोमो हो रहा है, लेकिन वो अपना ये वाला काम किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से करवा रही है. सिमिलरली कुरियर सर्विस का मेन काम होता है स्टूडेंट्स. कंपनी खुद तो इधर उधर पोस्ट नहीं करने जाती ना, कंपनी किसको हायर करती है, कुरियर सर्विस को हायर करती है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट, जो कि पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह, पार्सल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं. सो दैट कुरियर सर्विस इज अ नॉन कोर एक्टिविटी एंड देन दैट कम्स अंडर BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. राइट स्टूडेंट, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर एजेंसीज related to that business, right students, that is known as business process outsourcing. So business process outsourcing refers to getting a business task achieved through an outside agency. It can be defined as contracting out non-core and routine activities in which a business enterprise do not have expertise. Right students, नॉन कोर एक्टिविटीज, एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए नॉन कोर एक्टिविटी वो कुरियर सर्विस है. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए नॉन कोर एक्टिविटी जिसमें वो एक्सपर्टाइज नहीं है, वो क्या है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. राइट स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स. टू आउटसाइड एजेंसी स्पेशलाइज इन दोस एरियाज. The main objective of outsourcing is to obtain the benefit from their experience, expertise and efficiencies. I hope it is very much clear to you students. So there are 4 segments that comes under BPO. जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जो ऐसी एजेंसी है वो 4 काम लेती हैं. वो 4 काम कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट इज स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. राइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप देखिए मैक्सिमम जितने भी सोनी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे लिखा होता है मेड इन ताइवान.
है सोनी का पेटा प्रोडक्ट, लेकिन मेड इन ताइवान। सोनी ताइवान की कंपनी नहीं है स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन सोनी ने अपने एक बीपीओ उसके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लिया हुआ है कि सोनी के जितने भी मेनली प्रोडक्ट्स के जो स्पेयर पार्ट्स है वो ताइवान की एक कंपनी बनाती है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, राइट स्टूडेंट्स। तो वो जो बीपीओ का, वो जो सोनी कंपनी का बीपीओ है वो एक ताइवान की कंपनी है जो कि सोनी के प्रोडक्ट्स का स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करती है और बाद में वो भेजती है और सोनी खुद उसको असेंबल करके पूरा ओके करके कस्टमर्स को मार्केट में देता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन कम टू सेल्स मैन्युफैक्चरिंग, right students? The very first is contract basis for manufacturing, contract basis for sales, contract basis for research, and contract basis for informatics, right students? There are various research and development department है, pharmaceutical companies है, pharmaceutical companies of course students क्या बनाती हैं, medicines बनाती हैं, you know it very well। तो pharmaceutical companies को research and development department उन्होंने hire किया हुआ on contractual basis पर, एक XYZ कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो वो जो उन्होंने हायर किया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर बीपीओ का, दैट कम्स अंडर आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट, कि इस कंपनी के फार्मास्यूटिकल जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग कंपनी हैंडल करती है, दैट स्टूडेंट्स। सो देयर आर फोर सेगमेंट: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशंस जो कि प्रोवाइड कराती है बीपीओ कंपनी टू द पेरेंट, राइट। Now nature features of BPO. BPO involves contracting out, right students? Now let's discuss the features of BPO. Nowadays many companies has started outsourcing the activities of maintaining neatness, cleanliness and overall housekeeping of their premises. Many companies ने hire किया हुआ है agencies को for the neatness, cleanliness in the campus or in the company premises. This is what? This is of course outsourcing. आउटसोर्सिंग कंपनीज ऐसी फैसिलिटीज देती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, फर्म्स को, वो प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से लेबर मैनुअल, राइट स्टूडेंट्स, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सो बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। लेट्स recite this again students. Nowadays many companies have started outsourcing the activities of maintaining neatness, cleanliness and overall housekeeping of their premises to outside agency on a contractual basis. Second, non-core business activities are outsources. कौन सा काम ऐसा होता है जो कि दूसरी कंपनी से करवाया जाता है, दूसरी आउटसाइड एजेंसी से करवाया जाता है, जो कि मेन काम जिस कंपनी का नहीं होता, नॉन कोर एक्टिविटीज। लाइक आई गिव यू द एग्जांपल, राइट, ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से अपना एड करवाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक बीपीओ कंपनी से, आउटसोर्सिंग कंपनी से क्लीननेस के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करती है वहां के लोगों को, राइट स्टूडेंट, जिससे कि इनके अपने कैंपस साफ सुथरा रहे, हेल्थ हाइजीन के साथ रहे, राइट स्टूडेंट्स। बीपीओ जो बीपीओ कंपनीज होती हैं वो कुरियर कंपनीज भी होती हैं। कंपनी ने अपना जितने भी पार्सल्स होते हैं, जितने भी टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, वो एक बीपीओ कंपनी कुरियर सर्विस को हायर किया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज नोन एज बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। Non-core business activities like for school educating students is the core activity, like I told you earlier students, whereas running a canteen, uniform, counters etc. are non-core activity. They prefer to outsource canteen, bookshops, uniform, right students, counters etc. and keep education with themselves only. Most of the business firms are opting for outsourcing, right students, the following types of services. कौन-कौन सी सर्विसेज हो सकती है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, यू हायर, सपोजिंग यू आर हैविंग अ फर्म, ठीक है, आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करवाने के लिए आपने किसी एजेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपने हायर किया हुआ है, किसी एजेंसी से, फाइनेंशियल एजेंसी से चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने हायर किया हुआ है जो कि आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपके फर्म के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। सो उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी को जो आपने फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल कंपनी को हायर किया हुआ है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, राइट स्टूडेंट्स। प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। In outsourcing terminology, there are three types of third-party service providers. Right, students? The very first is captive BPO unit, which provides service to a given kind to only one firm. Right, students? So तीन तरीके की outsourcing होती है. The very first, students, is captive BPO unit.
फॉर एग्जांपल जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंडिया के अंदर काम करती है, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग कंपनी, वो अपनी पेरेंट कंपनी यूएसए को सर्विसेज दे रही है। स्टूडेंट्स, इंडिया की जितनी भी सर्विस है वो किसको दे रही है? पेरेंट कंपनी को दे रही है। सो दैट इज नोन एज कैप्टिव बीपीओ यूनिट्स which provides service of a given kind to only one firm. Example, General Electronics, GE Capital is the largest BPO unit in India. It is supposed to be the largest business unit in India for providing certain kind of services to the parent company in the United States. स्टूडेंट्स, कंपनी वो पेरेंट कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की है, लेकिन उसकी एक आउटसोर्सिंग कंपनी उन्होंने अपने इंडिया में रखी हुई है, और इंडिया के अंदर से जितनी भी आउटसोर्सिंग की सर्विसेज हैं वो सारी यूनाइटेड स्टेट पेरेंट कंपनी को जा रही है। राइट स्टूडेंट्स, और कौन सी है उसकी पेरेंट कंपनी? जीई इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स अ आउटसोर्स कंपनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में वो पेरेंट कंपनी। सो लेट्स डिस्कस अगेन स्टूडेंट्स कैप्टिव बीपीओ यूनिट which provides services of a given kind only to one firm. For example, General Electronics GE Capital is the largest BPO unit in India for providing certain kind of services to the parent company in the United States. Second है horizontal students. Persons, firms which provides their services to a wide base of clients cutting across countries. Right students, I hope it is very much clear to you. Horizontal facilities which provide करती है. Right students, let's discuss earlier. Persons, firms which provides their services to a wide base of clients cutting across the countries. Cutting across the countries का मतलब होता है different countries में जो provide करती है. Next is verticals. They may specialize in one or two industries and scales up to doing a number of process from non-core to core. For example, providing IT and financial consultancy only. There are some franchisees, you can say there are some outsourcing companies जो कि financial में deal करती है और IT में deal करती है. Right students, this is C. Horizontals का मतलब होता है ऐसी outsourcing companies जो कि हर एक सेक्टर में डील करती है। वो हर एक सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकती है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी, कुरियर सर्विसेज भी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी, एक आउटसोर्सिंग कंपनीज, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में होता है, वर्टिकल में सिर्फ वो एक या दो सेक्टर में डील करती है, दैट कम्स अंडर दे मे स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज एंड स्केल अप टू डूइंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस फ्रॉम नॉन कोर टू कोर, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग आईटी एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी ओनली. Right students, I hope this is very much clear to you. So under the third point of the nature features of business process outsourcing is process may be outsourced to a captive unit or a third party. Right students, under this there are 3 points. Captive BPO units, G का मैंने आपको एग्जांपल बताया. B horizontals में वो कई सारे सर्विसेज दे रही है. Verticals में वो एक या दो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है. Right students, I hope this is very much clear to you. Now the second one is scope of BPO. What are the scope of BPO? They are more popular known as call centers, which provides customers oriented voice based services on 24 hours into 7 days. About 70% BPO industry's revenue come from call centers. Right students, thank you students.